everyone. I welcome you all to my channel Learn English Today. In today's video, learning is going to be fun because we will learn some very cute phrases and idioms related to cat. So, without wasting any time, let's get started. The first idiom is let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag, meaning to disclose a secret often by mistake. यानी एक्सीडेंटली कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, किसी सरप्राइज को रिवील कर देना, जो नहीं बताना है उसको गलती से बाय मिस्टेक रिवील कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं. आई वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट सीक्रेट बट जेन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. Next sentence. The teacher let the cat out of the bag about the upcoming test. Next sentence is David let the cat out of the bag by posting a photo of the secret event online. Let the cat out of the bag to reveal a secret or surprise by mistake. Next is catnap. Catnap, meaning a short sleep, usually one which you have during the day. यानी झपकी लेना, बहुत कम वक्त के लिए सोना. टू टेक अ नैप, टू टेक रेस्ट, टू रिफ्रेश योर सेल्फ, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कुछ देर के लिए सो लेना इज कैट नैप. बहुत छोटी सी नींद. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. आई टुक अ क्विक कैट नैप आफ्टर लंच. शी फेल्ट बेटर आफ्टर शॉर्ट cat nap. A cat nap helped her feel more refreshed. Cat nap. Cat nap. The next one is fight like cats and dogs. Fight like cats and dogs. Meaning to have angry arguments all the time. मतलब कुछ लोग होते हैं जो हर बात पे लड़ते हैं, हर बात पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर लड़ते हैं एंड दे फाइट ऑल द टाइम. तो उसको बोलते हैं फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. जो बहुत फ्रीक्वेंटली, इंटेंसली, फियर्सली फाइट करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, तब हम इस इडियम को यूज़ करते हैं फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. वेन एवर दे डिसएग्री दे फाइट लाइक cats and dogs. The politicians fight like cats and dogs during debates. Third sentence. Those two neighbors fight like cats and dogs over the fence. Fight like cats and dogs. The next one is a beautiful one. Curled up like a cat. Curled up like a cat, meaning to lie in a comfortable curved position. कैट की तरह अपने अपनी बॉडी को राउंड कर लेना, अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में कर लेना, करके सोना, ये लेटना, उसको बोलते हैं कर्ल्ड अप लाइक अ कैट. बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में अपने शरीर को मोड़कर बैठना, लेटना या सोना, दैट इज कॉल्ड कर्ल्ड अप लाइक अ कैट. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. शी वॉज कर्ल्ड अप लाइक अ कैट ऑन द सोफा रीडिंग हर फेवरेट बुक. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. After a long day, he fell asleep, curled up like a cat in his cozy armchair. Next sentence. The baby was curled up like a cat in her mother's arm. So, curled up like a cat. Curled up like a cat. The last one. Cool cat. Cool cat, meaning someone who is calm, confident, and stylish. जो जिसकी तरफ लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि वो बहुत काम है, रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है, फैशनेबल है, और जो बहुत ही एफर्टलेसली काम रहता हो, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हों, तो उसको बोलते हैं कूल कैट. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. शी थिंक्स शी इज़ अ कूल कैट विथ हर न्यू सनग्लासेस.
My dad thinks he's a cool cat when he listens to old rock music. Third sentence, she drives a vintage car and looks like a cool cat. So, in today's video, we have learned some beautiful phrases and idioms. The first one, let the cat out of the bag, cat nap, fight like cat and dog, curled up like a cat, cool cat. So, these are some idioms and phrases which we have learned today. I hope you have liked my video. Thanks for tuning in to this journey of learning some idioms related to cat. Please don't forget to hit like, share, and subscribe. I will meet you in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.